Hello students, good morning and welcome to my YouTube channel which is by GS Okay students, देखो आम प्रीवियस क्लास में पढ़ी प्लस टू फर्स्ट ईयर क्लास कराई देख प्रीवियस क्लास से प्लस टू फर्स्ट ईयर में पढ़ी सो आज आम देखा सेकेंड ईयर प्लस टू सेकेंड ईयर फिजिक्स क्लास करवा ओके आगे सेकेंड ईयर पढ़ाई देख एप्लिकेशंस ऑफ एमपीएस सर्कुलर दुईटा एप्लिकेशन सरी सो आज आम देखा गोटे न्यू टॉपिक ओके न्यू टॉपिक देख दैट इज सेकेंड ईयर ओके फोर्स on a moving charge देखो force on a moving charge in an uniform magnetic field देखो very simple but question आसी पारे देखो force बाहर करिबा force on a moving charge okay in an uniform magnetic field जदि मने गुटे चार्ज टा यूनिफॉर्म magnetic field भीतर पास करिबो बा मूविंग करिबो ताहेले फोर्स ऑफ फार्मूला केते हो देखिबो ओके गुटे चार्ज जते बेले यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भीतर जते बेले क्रॉस करिबो मूव करिबो वी हैव टू फाइंड द फार्मूला फोर्स ओके स्टूडेंट्स तो फर्स्ट डू द डायग्राम करो समझते दिस इज डायग्राम देखो गुटे प्लेन नै जाओ ओके PQ RS इज द प्लेन देखो सो सेंटर ओ नियम दिस इज द लाइन ओके डायरेक्शन ऑफ फोर्स कहि पारो ओके एन कैप देखो एन कैप भी नहीं पारो दिस इज आल्सो लाइन वेलोसिटी v रे जाउची q चार्ज ता द q चार्ज तो याडे जीवो दिस इज द q चार्ज एट सेंटर ओ देखो दिस इज द सेंटर ओ q चार्ज इस साइड मूव करे वेलोसिटी v रे सपोज इट डायरेक्शन ऑफ b वेक्टर दिस इज द एंगल थीटा देखो एट थीटा एंगल ओके एंगल थीटा एट डायग्राम देखो मन रखो pqrs इज द प्लेन डायरेक्शन ऑफ फोर्स डायरेक्शन ऑफ n कैप देखो n कैप हो n कैप the direction of b vector direction of velocity okay q charge याडे मूव करिम okay students एट थ्योरी कोन आबो देखम let us consider okay let us consider a charge q is moving with uniform velocity moving with velocity v vector okay so let us consider a charge q is moving with uniform velocity v vector of magnetic field of uniform magnetic field okay of uniform magnetic field b vector देखो स्टूडेंट एटा तुम थ्योरी पारिबो ओके यूनिफॉर्म पार्टी दियो moving with velocity कर दिया moving with velocity v vector देखो let us consider a charge q is moving with velocity v vector of uniform magnetic field b vector देखो ओके माने गोटे चार्ज ता q टा मूविंग कला देखो with velocity v vector रे of कोठी uniform magnetic field b vector रे ओके स्टूडेंट देखो let us consider a charge q is moving with velocity v of uniform magnetic field b vector clear student देखो let us consider a charge q is moving with velocity v vector of uniform magnetic field b vector okay students next the charge q experiences the charge q experience a force that is f vector देखो force of 5 the charge q experience a force a vector formula कोन आबो देखो that is charge into v vector cross b vector that is formula मन रखो स्टूडेंट a vector formula कोन charge into v vector cross b vector q माने जे charge v माने जे velocity b vector माने कोन magnetic field तो formula कोन होय that is f vector is equal to q into vb sin theta into n cap देखो जानि सेडा कोन अपन a cross b रो formula कोन ab sin theta होय से v vector cross b vector रो formula कोन आबो vb sin theta into n cap equation 1 दे दे गिव इक्वेशन नंबर 1 एबे कोन करबा मैग्नीट्यूड बाहर करबा देखो तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स नेक्स्ट बाहर कर दियो द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ फॉर्मूला मैग्नीट्यूड कोन हबो वेक्टर n कैप टा उठी जीवो n कैप टा उठी जे देखो इज q vb sin theta ओनली देखो n कैप टा उठी जीवो इक्वेशन 2 दे दियो ओके ई n कैप टा कोन मैग्नीट्यूड उठी जीवो n कैप टा ओके नेक्स्ट हम देखिबा केस माने तापर आसीबो देखो सपोज केस 1 देखो केस 1 रे कोन आसीबो केस 1 रे इफ v factor is equal to 0 v vector equal to 0 नबा
then equation 2 becomes equation 2 টা কোন হবে দেখো equation 2 becomes that is modulus of f vector value কেতে হবে 0 হয়ে যাব দেখো তার মানে কোন equation 3 দিয়ে দাও that is equation 3 shows equation 3 টা কোন শো করিব equation 3 shows no force 0 মানে কোন no force is experienced when charge lying at rest দেখো lying at rest rest মানে কোন velocity 0 rest মানে velocity value 0 দেখো equation 3 shows কোন শো করা equation 3 টা equation 3 shows no force is experienced when charge lying at rest তো rest এ আছে সেটা কোন force ফর্মুলা 0 হবে দেখো equation 3 shows no force is experienced when the charge lying at rest in a magnetic field কই পারো in an magnetic field বা in a magnetic field কই পারো in a magnetic field দেখো in a করে in a magnetic field okay দেখো equation 3 shows no force is experienced when charge lying at rest in a magnetic field okay students next আমি দেখি case 2 দেখিবা case 2 টা কোন হবে দেখো case 2 case 2 রে দেখো when theta is অ্যাঙ্গেলটা when theta is equal to 0 degree or 180 degree দেখো 0 degree or কোন 0 degree or 180 degree তো কোন হবে equation 2 becomes দেখো equation 2 becomes মোর শুনে ভেক্টর ভ্যালু দেখো qvb sin 0 degree or 180 degree মনে রাখো সব কোন হবে মনে রাখো sin 0 degree be 0 sin 180 এর ভ্যালু কেতে 0 ওকে sin 0 এর ভ্যালু be 0 sin 180 এর ভ্যালু be 0 তার মানে কোন ভেক্টর ভ্যালু কেতে হলা এটা 0 হলা দেখো ওকে sin 0 এর ভ্যালু 0 180 এর ভ্যালু be 0 দেখো sin 0 degree মানে কেতে 0 sin 180 be কেতে মনে রাখো sin 180 degree b কোন হলা sin 180 degree b কোন হলা 0 দেখো তার মানে কোন ফোর্স ফর্মুলা 0 তো কোন হলা দেখো ইকুয়েশন 3 এখানে 4 করে দিও ইকুয়েশন 4 shows লিখি দিও ইকুয়েশন 4 shows কোন শো কলা no force is experienced when the charge parallel or anti-parallel the parallel or anti-parallel with magnetic lines of force দেখো magnetic lines of force ওকে স্টুডেন্ট দেখো এটা কোন হলো sin 0 ডিগ্রি 0 ডিগ্রি মানে কোন 0 ডিগ্রি এগুলো মানে প্যারালাল 180 মানে কোন অ্যান্টি প্যারালাল তো কোন হলো ইকুয়েশন 4 টা দেখো ভেক্টর ভ্যালু 0 ইকুয়েশন 4 shows no force is experienced মানে ফোর্স মিলিবনি কেতে বলে when the charge parallel or anti-parallel with magnetic lines of force যদি magnetic lines of force যদি parallel or anti-parallel হলে মানে কোন হবে ফোর্স ভ্যালু 0 হবে ওকে স্টুডেন্ট দেখো ইকুয়েশন 4 shows no force is experienced when the charge parallel or anti-parallel with magnetic lines of force okay students next আমি দেখবা case 3 দেখিবা দেখো next আমরা case 3 রে কোন হবে দেখো case 3 রে when theta is equal to 90 degree দেখো 90 degree okay এটা কোন হলো দেখো f vector ভ্যালু দেখো কোন হলো that is qvb sin 90 degree what is the sin 1 তো f vector maximum value বাড়ে দাও maximum value কেতে হলো that is qvb কোন হবে sin এর ভ্যালু 1 এটা দেখো এটা maximum value বাড়লা ইকুয়েশন 5 করে দাও ইজ দ্য maximum value লিখি দাও ইকুয়েশন 5 টা কোন ইকুয়েশন 5 shows a maximum force is experienced when the charge lying perpendicular to the magnetic field magnetic lines of force के ऊपर to the magnetic field देखो to the magnetic field देखो equation 5 देखो ना equation 5 shows a maximum force মানে maximum মিলিব equation 5 shows a maximum force is experienced when the charge lying
परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स कर द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स ओके फील्ड कहि चलो फोर्स कहि चलो मैग्नेटिक फील्ड बा मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स देखो इक्वेशन 5 shows a maximum force is experienced when the charge lying perpendicular to the magnetic lines of force okay students जते बेले तमर माने परपेंडिकुलर हबो कोन हबो फोर्स कोन मैक्सिमम लेबो q v फार्मूला q माने होजे चार्ज q माने कोन चार्ज v माने होजे वेलोसिटी b माने कोन मैग्नेटिक फील्ड देखो ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में पढ़िबा हमें मोटर इक्वेशन देखो नेक्स्ट क्लास में पढ़िबा टॉर्क ऑन ए करंट लूप और मोटर इक्वेशन देखो वेरी वेरी इंपोर्टेंट नेक्स्ट लिखि दउछि देखो टॉर्क ऑन ए करंट लूप और कहि परिबा हमें और मोटर इक्वेशन सिलेबस तुम अछि CHSE सिलेबस +2 फिजिक्स देखो टॉर्क ऑन ए करंट लूप और मोटर इक्वेशन और मोटर इक्वेशन ओके एटा फॉर्मूला यदि वीडियो यदि भल लागुछि माने काइंडली लाइक करो शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो और पकड़ थियो बेल आइकन को दबाई दियो ओके स्टूडेंट्स यदि वीडियो जो भल लागुछि माने काइंडली समस्त को शेयर कर दियो ओके +2 फर्स्ट ईयर वीडियो गुटी आसी छी ओके सेकंड ईयर सरला परे के दिन माने केता क्लास सरला परे +2 फर्स्ट ईयर वीडियो आसीबो ओके स्टूडेंट्स तो समस्त वीडियो को वेट करथा वीडियो आसीबो ओके स्टूडेंट्स बाय